Okay. So should I start? Yes, you can. Good evening, everybody. I welcome you all to day 5 of Scientific Technical Knowledge Sharing event on latest AI trends in cybersecurity. With us, we have Dr. Sandeep Negi sir, Professor Amit Verma sir, and as our guest of today, we have Shri uh, Abhinav Negi ji. Mm, Now, I would like to ask Dr. Sandeep Negi sir to kindly address the guest. yeah. सभी को नमस्कार, जितने भी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ में। और अभिनव नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत। अ, नेगी जी, अ, जैसा कि पिछले 4 दिनों से ये हमारा लगातार प्रोग्राम चलता आया है, एआई टुडे, और जो आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, उसके अतिरिक्त जो इनोवेटिव नए-नए काम टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर होते जा रहे हैं, तो ये प्रेज़ेंटेशन इन ही दायरों में रखते हुए डिफरेंट कॉलेजेस से जो हमने प्रेज़ेंटेशंस इनवाइट किए थे, तो उसी की सीरीज़ ये चल रही है। तो 2-2 प्रेज़ेंटेशन जैसे हर दिन हम लोग रख रहे हैं। और आज जैसे कि इसका 5वां दिन है, तो आज के लिए जैसे कि अभिनव नेगी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि समाज सेवा, वो भी नई पीढ़ी के लिए, और आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोया है, और उनकी संस्था जो कि कल्प वृक्षा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से वो चलाते हैं, तो उससे पूरे उत्तराखंड में डिफरेंट टाइप के इनोवेशंस और प्रकार के जो काम हैं इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा कराए जाते हैं, किए जाते हैं, है ना? तो मैं अभिनव नेगी जी को उनकी संस्था के बारे में वो खुद थोड़ा बताएँगे, और इससे हमारे बच्चों को किस टाइप से एक मोटिवेशन मिलेगा, तो जो है भाई साहब का मैं स्वागत करूँगा। उसके अतिरिक्त जो है सुभाष चंद्र बोस एकेडमी, अ, जो शिक्षा के क्षेत्र में इस रीजन में जो बालावाला, नथुआवाला और रायपुर से लगता हुआ पूरा रीजन है, उसमें एक प्रतिष्ठित स्कूल भी आप ही चलाते हैं भाई साहब, अभिनव नेगी जी। और तो मैं आप को भाई साहब से परिचय के लिए इनवाइट करना कराना चाहूँगा, तो भाई साहब आप जुड़ेंगे। अभिनव नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ढीली है। आई एम फीलिंग लिटिल अंडर द वेदर, तो बुखार है, इस वजह से कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ। तो वेरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे एक कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करा। वेलकम, वेलकम भाई साहब। अपनी संस्था के बारे में अगर हम बताएं तो कल्पवृक्ष मैंने 2022 में स्टार्ट करा था, हुँ, और मेन उद्देश्य ये था कि कैसे हम अपने उत्तराखंड के जो डिसएडवांटेज यूथ हैं उनको फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए कैसे तैयार करें, क्योंकि हमारे साथ काफी यंग जनरेशन जुड़ी है। तो आप में से कई लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बट दे आर स्टिल यूथ हु आर लिविंग इन रिमोट areas in Uttarakhand, and they don't have access to laptops or computers neither at their home nor at their school, right? So what they gonna do in the future, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सब कुछ ही आजकल तकनीकी से चल रहा है। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारा, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में हो, चाहे वो जॉब ओरिएंटेड हो। तो इसी में मेरा रिसर्च था। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मैंने अपना मास्टर्स करा 22 में, तो मेरा रिसर्च का टॉपिक था रोल ऑफ एनजीओज इन प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स इन उत्तराखंड। तो उसमें मैंने पाया कि हमारे बच्चों को कंप्यूटर और इंग्लिश में ट्रेन करने की बहुत आवश्यकता है। तो उसी को आगे बढ़ाते मैंने संस्था को स्टैब्लिश करा, और इसमें हम डिजिटल लिटरेसी, फ्यूचर स्किल्स, लीडरशिप एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर सर्व स्टूडेंट्स को। अभी हाल ही में हमने कैंप कराया था जिसमें हमने 10 बच्चों को आकाश के थ्रू नीट और जेई की स्कॉलरशिप दी थी 2 साल की। तो प्रयास ये है कि हम कैसे
सस्टेनेबल उत्तराखंड क्रिएट कर पाए, जिसमें हमारी जो यंग जनरेशन है उसका बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, और खासकर जो ग्रामीण यूथ है वो ज्यादा इसमें हिस्सेदारी दे पाए इस सस्टेनेबल उत्तराखंड के विजन को। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अवतार जी। और अब शालिनी जी से मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ाएंगे सेशन को। Yes, so should I start with presentations? यस यस। Okay, so first coming is Miss Kanchan ma'am, student of MTech, presenting on modern war technologies. Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग। Am I audible? यस। Is this visible? यस विजिबल। Okay, sir. So, good evening, everyone. My name is Kanchan, and I am MTech first year student in Power System in Faculty of Technology. My topic is Modern War Technology. In this PPT, we contain evolution of warfare, AI in warfare, unmanned aerial system, advanced drone system, autonomous weapon, hypersonic weapon, and so on. So, this is the evolution of warfare. Modern warfare has transformed from conventional battlefields to multidimensional conflicts, spanning cyber, space, and autonomous domain. And this is the picture. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हम कैसे वॉर करते थे, नाउ सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन आते आते हमने बंदूकें वगैरह ये सब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फोर्थ जनरेशन में हमने थोड़ा बहुत ड्रोन और फाइटर जेट बना लिए थे, और आज के टाइम में फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो इस टाइम पे जो वॉर है ये मोस्टली एआई के बेस पे हो रही है। सो दिस इज द की टेक्नोलॉजी डोमेन। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज साइबर वॉरफेयर। ऑटोनॉमस सिस्टम में क्या है कि हम जितने भी आजकल के वॉर के टाइम हम जितने भी वेपन यूज कर रहे हैं मोस्टली हम ड्रोन यूज कर रहे हैं और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। जो हम पहले यूज करते थे इन सब में सब ह्यूमन बेस होता था। कोई भी हम अगर स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं या फिर टेक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं ये सब ह्यूमन लेता था, और आज के टाइम पे ये सारे डिसीजन एआई द्वारा लिए जा रहे हैं। दिस इज अ ग्लोबल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम डेवलपमेंट। ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब ये है कि हम कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम ये यूज कर रहे हैं, इसमें हम सब एआई और सेंसर के थ्रू यूज कर रहे हैं। This work in independent operation for identify, select, engage and target without any human intervention. So इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऑटोनॉमस ड्रोन, ऑटोनॉमस व्हीकल और एआई मिलिट्री सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया एंड इजराइल एंड अदर कंट्रीज। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर। Artificial intelligence in a real-time intelligence process and analysis, predictive battlefield modeling and decision support, autonomous logistics and resources optimization. वॉर में हमने एआई यूज करके हम किसी भी हमारा कोई अगर कोई टारगेट है, अगर कुछ हमें दिखता है तो इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेफ्टी पर्पस के लिए है ये बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन है। दिस इज ए एफपीवी ड्रोन रुशाक एस। ये रशिया का बनाया हुआ ड्रोन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी एडवांस है। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और ये 150 किलोमीटर पर आवर के रेंज से अटैक कर सकता है। इसे हम कामिकाजे कैरिंग भी कह सकते हैं, लाइक ए सुसाइड ड्रोन। इसमें हम विस्फोटक या एक्सप्लोसिव कुछ सामान हम इसमें रख सकते हैं, और ये अगर हम इसे कोई टारगेट दे देते हैं, लाइक इसमें हमें बस कमांड देनी होती है और ये फिर खुद ही सिलेक्ट करता है, और उसके बाद ये उस पर खुद ही अटैक कर सकता है। ये 500 से 1000 मीटर ऊपर तक किसी टारगेट के ऊपर उड़ सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है।
अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो रशिया ने काफी अमाउंट में ये ड्रोन यूज किए हुए हैं। और जो दूसरा डायग्राम है, दिस इज ए मार्स यानी मॉड्यूलर एडवांस्ड आर्म रोबोटिक सिस्टम। ये यूएसए के द्वारा बनाया हुआ है। ये जो हमारी आर्मी होती है, इन्फेंट्री आर्मी, ये उसके सपोर्ट में काम आता है। ये 360 डिग्री तक घूम सकता है। इसमें हम M240B मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर हम इसमें यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज दिस इज अ क्वाड्रपल UGV। दिस इज ए घोस्ट रोबोट, इसका नाम है विजन 60। इसका काम है किसी भी टारगेट को रिकॉग्नाइज करना और सेफ्टी प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ ये लोड कैरिंग के लिए भी यूजफुल है। सेकेंड वन इज AI फोर्स मल्टीप्लायर। एआई में हम मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज करके हम काफी सारे वर्क कर सकते हैं, लाइक ड्रोन स्वार्म कोऑर्डिनेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, एनी सैटेलाइट इंटेलिजेंस, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डिसीजन मेकिंग। Next one is unmanned aerial system. This is a drone have revolutionizations military operation with low cost and high impact capabilities. This is a FPV drone यानी first person views drones with tactical recognitions. This is UAV and UAS, unmanned aerial vehicle and unmanned aerial system. This is a type of unmanned aerial vehicles drones. फर्स्ट वन इज MQ9 रीपर। ये यूएसए द्वारा बनाया गया है और ये काफी एडवांस वर्जन का ड्रोन है। ये 50,000 फीट से ऊपर की रेंज में उड़ता है और इससे हम 27 आवर तक कंटिन्यूअस ये उड़ सकता है। इसमें हम 1700 किलो तक विस्फोटक और मिसाइल्स वगैरह रख सकते हैं। और अभी इंडिया ने भी रशिया से इसे लिया है। इसका एडवांस वर्जन MQ9 स्काई गार्जियन और सी गार्जियन है, जो 11,000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। अभी जो अमेरिका ने ईरान पे मिसाइल दागी है तो उसमें भी इन्होंने MQ9 रीपर का यूज किया हुआ है। सेकेंड वन इज बायरक्टर अकिंसी। ये तुर्की का बनाया हुआ एडवांस लेवल का ड्रोन है। इसकी खासियत ये है कि ये हवा से ही मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दिस इज अ टाइप ऑफ ABLM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये 1500 किलो तक अपने कंटेंट वगैरह रख सकता है। और इसके साथ ही इसके थ्रू तुर्की ने UAV 122 का जो मिसाइल है इसके थ्रू ही दागी है। नेक्स्ट वन इज लीथल ऑटोनॉमस वेपन। दिस इज ए वेपन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशंस। ये खुद ही टारगेट सिलेक्ट करता है और खुद ही अटैक कर सकता है, हमें इसे बस कमांड देनी होती है। इंडिया में अभी 2 जो लीथल ऑटोनॉमस वेपन है उन पे काम चल रहा है। फर्स्ट वन इज रुस्तम 2 एंड सेकेंड वन इज दृष्टि 10, जो 280 से 350 किलोमीटर पर आवर की रेंज तक वार कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम, दिस इज ए मिसाइल ट्रेवलिंग एट स्पीड एक्सीडिंग मैक 5, यानी ये ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चल सकती है। और इसकी खासियत ये है कि इनकी स्पीड काफी ज्यादा है, इसीलिए इन्हें किसी रडार के कांटेक्ट में आने से ये इनविजिबल हो जाती हैं और इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाइपरसोनिक्स: लॉन्ग डिस्टेंस प्रिसिजन स्ट्राइक्स, हाई मैन्यूवरेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट। दिस इज ए रशिया किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे हम डैगर भी कह सकते हैं और इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। हम कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड से 10 टाइम ज्यादा फास्ट ये जा सकती है। और 1500 से 2000 किलोमीटर दूर अगर कोई टारगेट है तो ये उस पर अटैक कर सकती है। नेक्स्ट वन इज साइबर वॉरफेयर ऑपरेशंस। आजकल के टाइम में जो AI के थ्रू हम जितने भी एक दूसरे देश कंट्री पे अटैक कर सकते हैं, तो साइबर वॉरफेयर इसमें मेन है। सबसे पहले किसी भी कंट्री के नेटवर्क वगैरह पे ही अटैक होता है, जिसके थ्रू ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा कम्युनिकेट ना हो पाए। दिस इज डिस्ट्रप्शंस ऑफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एस्पियोनेज। इसका यूज हम मोस्टली जासूसी करने में और हैकटिविज्म एंड रैंसमवेयर में इसका यूज होता है।
दिस इज ए डायग्राम, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि एनिमी नेटवर्क कहाँ कहाँ पे कैसे रैंसमवेयर और हैकटिविज्म में यूज हो रहा है और कैसे हम इससे सेफ्टी और प्रिकॉशंस इसमें हम रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। दिस इज ए सैटेलाइट सर्विलांस एंड रिकॉग्नाइजेशंस। इसमें हम जीपीएस का यूज करते हैं और एंटी सैटेलाइट वेपन्स इसमें यूज होता है। नेक्स्ट वन इज स्टील टेक्नोलॉजी। दिस इज ए एडवांस टेक्नोलॉजी और आजकल जितने भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह बन रहे हैं सब इसी के बेस पे बन रहे हैं। जो पहले के हम एयरक्राफ्ट्स यूज करते थे उनका शेप थोड़ा अलग होता था जिसके कारण वो रडार के कांटेक्ट में इजीली आ जाते थे। हमने स्टील टेक्नोलॉजी में क्या किया, दिस इज ए टेक्नोलॉजी इन विच वी कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट इनविजिबल और पार्शियल इनविजिबल टू रडार एंड अदर डिटेक्शंस। इसमें हमने फाइटर्स के शेप चेंज कर दिया और जो रडार ऑब्जर्वेशन मटेरियल हमने इसमें यूज किया है ताकि ये रडार के कांटेक्ट में आके इसकी सारी रेडिएशन स्कैटर्ड हो जाएं। और इसमें हमने जो इसका इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम है वो हमने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि क्योंकि हीट के थ्रू कोई भी रडार इन्हें ऑब्जर्व कर सकता था तो इसमें हमने इसे हीट इसमें कम कर दी। दिस इज ए डायग्राम ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी। दिस इज ए F1117A, ये भी यूएसए के द्वारा बनाया हुआ है और इसके और टाइप लाइक SU-57 रूस ने बनाया हुआ है और J-20 चाइना ने बनाया हुआ है स्टील टेक्नोलॉजी से। This is a directed energy weapon. This is also a type of steel technologies. इसमें हम गोली बारूद ये सब यूज ना करके बल्कि डायरेक्ट हम हाई एनर्जी लेजर का यूज करके और माइक्रोवेव का यूज करके हम किसी भी ड्रोन को उस पे हम अटैक कर सकते हैं। अभी जो हमास और इजराइल का वॉर चल रहा था तो इसमें इजराइल ने काफी अमाउंट में इसे यूज किया हुआ है। आयरन बीम नाम से जो उन्होंने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाया था इसे यूज किया हुआ है और फिलहाल इंडिया में डीआरडीओ भी इस पे काम कर रहा है। 2027 तक 3000 किलोवाट का सूर्य नाम का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बनाया जाएगा। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बारिश और कोहरे में इसमें काम करने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सिस्टम। इसके एडवांटेज ये हैं, दिस इज ए रियल टाइम बैटलफील्ड विजुअलाइजेशंस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर ऑब्जर्वेशन एंड मल्टी डोमेन कमांड एंड कंट्रोल। इसके थ्रू हमने तीनों आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ये तीनों आपस में कनेक्ट कर दिए जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग इजीली हो जाए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग इजीली हो सके। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न किल चेन। इसके थ्रू हम कोई भी हम पे अगर अटैक होता है तो इसके थ्रू हम रियल टाइम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और काफी कम अमाउंट में हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज रियल टाइम डिटेक्शन एंड देन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन डिसीजन मेकिंग एंड देन लाइक लास्ट वन इज स्ट्राइक। Nowadays we used weaponized AI like biological weapon, cyber attack, chemical weapon and drone system. And this is top nuclear power. सबसे ज्यादा अभी फिलहाल रशिया एंड अमेरिका के पास है। आफ्टर दैट चाइना, यूके, देन इंडिया पे 180 अभी न्यूक्लियर वेपन है। फ्यूचर वॉरफेयर ट्रेंड्स। इन फ्यूचर वी यूज स्वार्म रोबोटिक्स एंड कोलैबोरेटिव ड्रोन्स। We also use cryptography, brain computer interface for operators, and enhanced soldier augmented systems. इन फ्यूचर में हम एआई के थ्रू हम स्वार्म टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं एंड क्वांटम कंप्यूटिंग भी हम यूज कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। रिस्क और एडवांस इन रिस्क ऑफ एडवांसेस टेक्नोलॉजीज। इसके डिसएडवांटेज ये है कि लोअर बैरियर्स टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, रिड्यूस ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी इन वॉरफेयर, prolifications of autonomous weapon and ethical concern in AI decision makings. Next one is technology leaders in 2026. अभी इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे फिलहाल यूनाइटेड स्टेट चल रहा है जिसने एआई सिस्टम से स्पेस टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक्स मिसाइल्स काफी अमाउंट में बना लिए। एंड नेक्स्ट चाइना और रशिया और इंडिया भी फिलहाल इस पे काम कर रहा है। एंड लास्ट इज कंक्लूजन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. That was really informative.
Now, if anybody has any questions or queries, you may ask. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, रेज कर सकता है। ओके। जैसा कि ये प्लेटफॉर्म है एआईकेएन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टिसिपेशन, अपने अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो जो नए दर्शक हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन थी। और इसका पर्पज ये है कि हम पूरे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को इसके अंदर जोड़ेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे जहां पर वो अपनी स्किल्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो शालिनी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आज के लिए। Yes, sir. Next is Miss Anushka ma'am, student of BTech third year, presenting on AI. Hello, am I audible? यस यस। Um, so is my screen is visible? यस, Hello. विजिबल विजिबल विजिबल। Okay, yeah. So I'm starting presenting. Good evening, respected guests, teachers, and student. My name is Anushka. I'm third year BTech Computer Science student, and today I'm here to present on the topic artificial intelligence and machine learning. In today's world, technology is growing really fast, and AI is one of the most important innovation that is changing our daily lives. Like we can say from smartphones to self-driving cars, AI is everywhere around us. So in this presentation, I'll be explaining about what AI is, how machine learning is related to AI, its example or I can say application of AI, advantages, disadvantages, and how we can use AI responsibly. So, first of all, what AI is? I think we all have heard this term, artificial intelligence. It is a field of computer science that is dedicated to build system and software that can think like human and also which can perform tasks which usually require human intelligence. So, in simple words, we can say that AI is a system or software which mimic the human intelligence, such as perceiving, reasoning, and learning. AI can be used for various purposes such as speech recognition, decision making, and language translation. So, when we talk about the artificial intelligence, machine learning is a term which automatically come into the frame. We can say machine learning is a subset of AI. Think of AI as a broad universe and machine learning as a specific engine. In machine learning, we give the algorithm and data to the machine or software so that it can learn patterns from it. Also, machine learning enables the machine to learn from its experience, such as humans do. Machine learning also improves the performance over time without explicitly programming for like every single task. If I have to take example, so let's say think of AI as a toy, and when we first show some images of like a cow, dog, cat to that toy, it unable to recognize it. And after some attempts, like if we show some pictures and provide data and characteristics of animal such as dog, then after several analyzation, that toy is able to recognize it and give answer that yeah, it's a dog. And once it recognizes it, it will remember everything. So we can say machine learning is used to train the robot or software so that after certain point it start giving answer. Let's see some examples of artificial intelligence. First of all, virtual assistant.
Virtual assistant, we can say, is a software that helps user to perform tasks by using voice or text command. For example, let's say Siri, Alexa, Google Assistants. These voice assistant can answer calls, play music, and also set alarms, set timers. Also, they can nowadays they are also used to control the smart devices. Let's say example of Alexa, which nowadays use for the home automation, in which we give a voice command such as turn on the fan, turn on the light, and turn off the light. So it performs task according to that voice command. For this, we use NLP, that is natural language processing, and virtual assistant use NLP to understand the voice and to process our request, also to give the intelligent response. Second thing आता है recommendation system. It is something that suggests products, movies, videos, or content which is based on the like human interest or the behavior, like for a particular behavior. I mean, for person's particular behavior and interest. And recommendation system used in various applications such as Netflix, Spotify, YouTube. For example, in YouTube, we search for a specific song, and after some time, in the home tab, it shows similar songs. Also, it can be used in the shopping apps such as Myntra, Amazon, in which we search for some product, and the next thing or the next product it show related to that. But we have searched. That is all comes in the recommendation, and this all can be done by the AI. We can use like collaborative filtering and content based filtering for this. Like they both are the AI model, or we can say art of AI. Next thing is navigation. It can be like AI can be used in a navigation system or apps such as Google Maps. When we go out and we search for some location, and it suggests the shortest path to us. It also can be used in apps like such as when we order something from the Blinkit or Zomato. So with the help of AI, it shows the cheapest and the shortest path to that delivery person to reach our home. And next thing I talk about facial recognition also, in which system which recognize the facial expression and which is used in various fields such as in the mobile application to unlock the phone, and for the attendance system also, which updates which keeps track of the in and out time of particular person or student. And we use YOLO V8 for this, like it's a AI model, you only look once version 8 model, which is used for the specifically facial recognition, and it update in the real time. Next thing, that is autonomous vehicle. We all heard this, like nowadays these are very common automatic vehicles. Next thing, chatbot such as chat gpt, Gemini, Claude, which we are using. Next thing, Sophia, the AI robot. Yeah, so we all know her for its human like expression, advanced conversational ability, and its potential to use in the services and education or labors. And similar to Sophia, there is a robot called Tesla Optimus Gen 3, which is it's a like highly advanced humanoid robot which is designed for both industrial and household use, which have like really refined joints and really refined coding to perform tasks. And next thing, if I talk about what problem can AI solve. So in cybersecurity, AI used to solve problem of alert fatigue and increasing the speed of modern attacks like AI fueled ransomware. For that, AI uses unsupervised learning to spot the never before seen threats based on the anomalies in the behavior. Its simple example is spam detection in the emails. When we see like it categorize automatically the spams in our email mailbox. Next thing, in the healthcare,
AI addresses the global workforce shortage. It also address the increasing rate of the diagnostic errors. Example like wearable AI's identifier. For example, device which identify the unusual heartbeat. So what it does is, if a person wearing that device and it recognize that unusual increase of heartbeat or like increase of heartbeat, so it immediately sends some text message to their family or the registered number. So yeah, in research it's also used for like categorizing the data or for generating the summary of research papers. In transportation I talked about like self-driving cars. So yeah, next thing is, if something like have this much advantages, then it definitely have few disadvantages. First thing is privacy concern. So to AI to work well, we need a lot of data and information to the AI, so that it can work well. And this may include your personal information, such as where you go, what you buy, etc., etc. And many people worry that this data isn't always kept safe or private. And the next thing is bias discrimination. That means, like, since we know that AI learns from information that is created by humans only, and if this information contained like mistake, then AI will learn them too, and like it do not have its own intelligence, so w- it cannot correct it by itself. Next thing we can say, AI don't have common sense or feelings. Means AI does not actually understand things the way we do, and it lack of empathy, and it also can't feel emotions because it's a machine, of course. So like if it might take some decision that is logically correct, but in real time it's very cold, or we can say hurtful. And next thing is how we can use AI responsibly. So it means it means being smart and kind when we use the AI. Think of it like using a powerful tool like a car or chainsaw, which is great, but only if you know the rules. So, when we use AI, we need to keep in mind some points, such as first of all, we have to keep the people first. Means nowadays it's very common like discussing something with AI like Chat GPT or Gemini, like some discussing some problems with them. It's okay, but it cannot replace the people around us, and we have to prioritize people. Second thing, we have to very sure to keep our data and privacy in a very precise way. Like we don't have to share the we don't have to share data blindly to the AI. Also, we do not share the private information to AI, so that it cannot use that in the future. Because whatever we typed stayed in the AI for like so next thing is okay. So yeah, next thing is use of AI. That advantages I have talked about is earlier. And yeah, thank you so much. Thank you so much, ma'am. That was a great presentation. Now, if anybody has any question or feedback, well, you can proceed with it. आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, तो वो अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके साथ में हमारे साथ भाई साहब श्री जगदीश पोखरियाल जी, भाई साहब, आदरणीय भाई साहब जगदीश पोखरियाल जी, वो जुड़ चुके हैं और उनका मैं स्वागत करता हूँ। और
नया कोई प्रेजेंटेशन है तो शालिनी कोई इसके बाद। अक्षित कोई प्रेजेंटेशन है अभी? Yes, sir. Vipra ma'am की है. हाँ, विप्रा मैम का नहीं है, विप्रा मैम का। ओके, विप्रा इज गोइंग टू प्रेजेंट प्रेजेंटेशन। Hello, good evening, sir. ओके, गुड। Actually, I have connected with two of the devices, so I have to. मतलब आपको अपना माइक ऑफ करना पड़ेगा जिससे एको ना हो। हाँ, ठीक है विप्रा। सर ये फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन आ रही दिख रही है। प्लीज प्रोसीड। Okay. Good evening, everyone. Oh. Hello. हाँ, आप प्रोसीड करिए, लगातार। Good evening, everyone. I am Vipra. Sir, actually ये अभी भी एको हो रहा है, तो should I continue? आप अपने अपने ऑडियंस जो हैं सेपरेट माइक ऑफ करेंगे, उसको म्यूट करेंगे, वैसे तो है नहीं। सभी के माइक बंद है वैसे। सर ये टेक्निकल ग्लिच तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे तो एको हो रहा है। एक डिवाइस का स्पीकर इनपुट बंद कर दो तो इट में वर्क। एक्चुअली बंद है, लैपटॉप का इनपुट बंद है। तो साथ में मोबाइल भी तो नहीं रखा हुआ है? सर मोबाइल से ही मैं माइक्रोफोन यूज कर रही हूँ। और लैपटॉप का स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन मुझे लगा थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हाँ सर, लैपटॉप की स्क्रीन। आप लैपटॉप का स्पीकर भी बंद कर दो, then it will work. क्या? लैपटॉप का स्पीकर बंद एक चीज कीजिए। पूछिए। लैपटॉप में आपने भी स्पीकर ऑन कर रखा है ना? लैपटॉप का लैपटॉप माइक्रोफोन खराब है तो मैंने फोन से कनेक्ट किया था। नहीं नहीं, दैट्स फाइन, पर आपने माइक तो म्यूट कर रखा है, बट आपने स्पीकर ऑन कर रखा है लैपटॉप का, तो उसको भी आप म्यूट कीजिए। अच्छा, okay. Now it should ठीक है work. भाई। हेलो। यस,
अभी echo हो रही है? हाँ, अब ठीक है। ओके ओके। Good evening, everyone. I'm Vipra, an MTech Power System first year student from FOT UTU. I've come up with the presentation on the topic artificial intelligence. So, in this presentation, we will be talking about what AI actually is and how it works and where it is used and its pros and cons. So, artificial intelligence is revolutionizing every aspect of modern existence, from how we communicate to how we work, learn, and even think. This presentation explores the transformative power of AI, examining its foundations, current applications, and the profound implications it holds for humanity's future. Um, I want you to take a second and think about the last time you used your phone today. Or maybe you unlocked it with your face and or maybe asked Siri for the weather or scrolled through your Facebook or Instagram feed and find what you exactly wanted to see. So these all algorithms use artificial intelligence. Without even trying, you have already interacted with one of the most transformative technology, which is artificial intelligence. It actually refers to computer systems capable of performing tasks that typically require human intelligence. These systems can learn from data, recognize patterns, make decisions, and improve through experience without being explicitly programmed for every scenario. Like it can you can think of things like recognizing a pattern, making a tough decision, learning from a mistake, or driving a car. Like cars nowadays are being driverless. So AI also encompasses various subfields, including machine learning, natural language processing, also known as NLP, computer vision, and robotics. ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स जो पहले यूज होते थे उसमें वो अडेप्टेबिलिटी रहती थी ओल्ड सॉफ्टवेयर्स दे एक्चुअली दो सॉफ्टवेयर्स followed a rigid set of rules like if I will give like example if A happens do B and if A doesn't happen do C, such kind of examples which had kind of rigidity, but here AI learns from the information it processes. It doesn't need to be explicitly programmed for every single scenario. It evolves with the different inputs. So how does AI work? The AI basically work in this algorithm. It collects data, and the data is then trained to for a particular action. The data collection, it is the foundational stage where raw material is compiled to build a model's intelligence. इसमें data collection, it can be through images, text, or sensors like uh, infrared sensors and such things. The data is collected. Model training may during training algorithm process the collected data to build a mathematical representation of how the world works. Algorithms analyze millions of examples to adjust weights. There's a term called weight, and we'll be talking about it in our upcoming slides. Gradually learning the relationship between different variables. Also, an iterative process is also used where the model refines itself to produce more accurate responses over time. Also, if we talk about machine learning, there is three types of machine learning, which include supervised, unsupervised, and there was one more reinforced learning. In supervised learning, the model specifically learns to map inputs to be labeled to labeled answers, like identifying a cat in a photo by comparing it to thousands of known cat images. Like obviously, AI has a lot of data, so it compares
all of the data and images of cats, like for an example. And decision making and continuous learning is done through feedback and back propagation method. We will talk about it in upcoming slides. Here it is there are two types of neural network in this picture. One is biological neural network and another is artificial neural network. I've combined the picture just to show you that these are not much of different. These both of the diagrams resemble a lot. So biological neural network is comprised of dendrites, which are the receivers, and soma, it is the cell body, it is the processor, and axons, these are the senders of the data. So BNN actually uses electrochemical signals transmitted across synaptic gaps, also known as synapse. Dendrites receive signals. If the sum surpasses a threshold in the soma, it the neurons that activates through that electrochemical signal, and it transfers data from one neuron to another neuron. The same process is used in artificial neural network as well, whose diagram is given below the neuron diagram. In artificial neural network, it is composed of artificial neurons organized. These are organized in such a way that there is an input layer, a hidden layer, and the output layer. It uses weighted numerical inputs and activation functions. Each input is multiplied by a weight, which is also the strength of the input, summed and passed through an activation function. The activation function can be sigmoid or Rayleigh function. Actually, there were inputs like binary where we use 0 or 1, either white or proper black. So there are sigmoid and Rayleigh function as well. The inputs are non-linear, where the range of 0 to 1 is also considered, which determines the output. So the slides show the neuroscience behind AI, which includes brain structure, learning, error correction, and reward system. Neural networks, just as the brain uses connected neurons to process information, AI also uses artificial nodes arranged in input, hidden, and output layers. Synaptic weights are used in the brain like neurons that wire together, strengthening connections. AI simulates this by adjusting mathematical weights between nodes to improve accuracy. Method of propagation is used where uh, like humans learn from mistakes. Like if we do something wrong, then we recall it and implement different steps to do that particular thing. The same method artificial intelligence uses, it is called backpropagation. The system compares its result to the correct answer and moves backward through layers to adjust connection and minimize errors. Reinforcement learning this is one of the type of machine learning where it is inspired by the trial and error method, aiming to maximize a reward. A method used to train autonomous vehicles and robots. Autonomous vehicles uh, basically means the driverless vehicle where steering is controlled by the artificial intelligence. This is intelligent agent system where action and percept model is used. In this model, there is an agent. Okay, the agent has sensors. The agent is sensing uh, like human have five senses. If suppose the agent is human, so human have five senses like sight, hearing, smell, taste, and touch. So it would be sensing for any of the input, any of these senses from the environment, and it will take action according to that input. Like suppose it is raining, so like it suddenly starts raining. So what we will do? We will find shelter to protect ourselves. So that would be the action. The percept is that it is raining. The body sensed
that it is raining. The same way the intelligent agent system work, the artificial intelligence system, where the percept is the raw data the agent receives at any single movement through its sensors. Sensors could be touch sensors, infrared sensors, microphones, keyboards, camera, mouse. These are all our input devices to the artificial intelligence. Basically, sensors play a major role in as a percept model. The agent function is obviously our brain, just like our brain. This is the internal logic or the rulebook. It takes the current percept as input and maps it to a specific action. So the action of the agent completely depends on the percept, what kind of input we are giving to the device. And the action is obviously the change in our gestures, motion, and in artificial intelligence or machinery terms, we can say that the action is the change in the speed of motors or speakers or screen displays. Screen displays is also one of the examples. And so the action, this is the physical or digital response triggered by the agent's actuators. This is one of the example of action percept model where the entertainment recommendation system is mentioned. It 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 works on AI model like the like if you watch any kind of movie on internet, any genre of movie like sci-fi movie and give it a rating. If we complete it and give it a 5-star rating, it would take it as an input. This would be the input to the device that we gave it a 5-star rating and we like the movie. The percept will think the AI model will take it as a positive feedback and it then it analyzes all of the rating history, what kind of movies I like, and compare it with other users as well who like the same movie. And the action would be जो recommended for you वाला section होगा वहाँ पे मेरे choice की movies वहाँ पे आने लगेंगी. Suppose science fiction movies, if we talk about, then if I'm giving 5-star rating to many of the science fiction movies, then it will recommend only the science fiction movies to my recommendation for you वाला section. So the learning, if you click one of those recommendation but stop watching after 2 minutes, अगर कोई मूवी मेरी फील्ड में ऐसी आती है जो मुझे नहीं, जो स्क्रीन पे जो मुझे नहीं अच्छी लगी, जो मैं 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद बंद कर दी, जो एजेंट होगा वो इसको एक फॉल्स पॉजिटिव एक्शन लेगा और वैसे टाइप की मूवीज को मुझे आगे सजेस्ट ही नहीं करेगा. So this is one of the example of action percept model. There are several other examples as well, like smart thermostat. Like if I have to maintain a particular temperature of the room, then there would be also the action percept model. There percept the will be the input of the temperature of the room, and action will be the maintenance of that particular temperature of the room. Suppose if the temperature is 23 or maybe more, 28 degrees Celsius. So what it will do, it will take it as an input and try to maintain the temperature at 22 degrees Celsius, which would be the action. And there are other examples of it as well, like uh, vacuum cleaners and more. This is kind of a structure of artificial intelligence model, which includes, like I earlier mentioned, machine learning, natural language processing, computer vision, deep learning, neural network. Types of AI. This is have a vast slides of types of AI. This slide shows the types of AI by the capability of the AI. This is by functionality and this is by application. One by one, we will go through it. By capability, these are the evolutionary stages of AI where right now, these days, we are using artificial narrow intelligence, which is a weak AI, which specializes in particularly one area like
For text, we use ChatGPT. For like image generation, we use another AI tool, and for video generation, we use another AI tool. This is one of the example of artificial narrow intelligence, which we are using nowadays. And there is artificial general intelligence, which is a strong AI, which is right now a theoretical AI, which that can perform any intellectual task a human can with cognitive abilities and adaptability. इससे काम चल रहा है. And there is artificial super intelligence, which is right now hypothetical, which will someday surpasses the human intelligence and creativity, reasoning, problem solving, which is basically the cognitive intelligence, which will be surpassed. By functionality, there are reactive machines, limited memory AI, theory of mind AI, self-aware AI. Reactive machine is the most basic type, which does not store memories or use past experiences to determine future actions. So these both are examples of actually chess playing AI. Deep Blue and IBM's chess playing AI. These both are AI tools or machine, you can say, which can be used to play chess. But these does not store memories. Limited memory AI, which stores past data to make informed decisions, commonly using autonomous vehicles and chatbots. Chatbots, which we daily use, like ChatGPT, Gemini, these all of the uh, chatbots actually store information just to make them perform better from past outputs. These these kind of bots store memory but limited. Theory of mind AI, it is yet to exist, which which will understand human emotions, beliefs, and intentions to interact. Self-aware is the final stage. It would be it would be having conscious state of its own existence. That is self-aware AI. It is also theoretical. By application, there is generative AI, which learns patterns from data to generate new content such as text, images, videos, or codes. Like for text, we use ChatGPT, images के लिए Midjourney, videos के लिए Sora, codes के लिए GitHub. These are the examples of generative AI. And there is agentic AI, which acts autonomously to achieve complex goals, planning and executing multi-steps tasks without constant human oversight. मतलब इसको human के input की जरूरत नहीं पड़ेगी. It will act autonomously to give particular output. Natural language processing, their translation bots are used, like Google Translation and chatbots, which help us translate different languages, enables machine to understand and interpret existing human languages. Computer vision, which analyzes and recognizes visual data, object detection, and medical image analysis. It would be helpful in medicine. Predictive AI, which forecasts future outcomes by analyzing historical data patterns. This predictive AI method is actually used in power system where load forecasting and technological forecasting is done. So this is the role of AI in our everyday life. So nowadays our actually life starts with AI and the day ends with AI only. Like it would be our phone keeps suggesting us things which we want to buy or see, or wherever you put the input, like if you even Google it, you will have it on Instagram the next day or the next hour. So AI is used in voice assistant, smart homes, like automated homes where doors are opening and closing by themselves, and lights lights are operating by themselves. Social media, like I told in the very beginning, e-commerce, navigation, entertainment.
what is the future of AI? फ्यूचर में एक्चुअली हेल्थ केयर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा बिकॉज रोबोटिक सर्जरीज विल बी इंक्लूडेड इन मेडिसिन दैट वुड बी one of the biggest achievement for us. Autonomous transport, like there will be driverless cars. There are still, this is still in operation. Driverless cars are still in operation, but not in India. There will be autonomous transport, adaptive learning, like chatbots and AI can make specific uh, notes or model for a student to learn according to his or her capabilities and his or her learning style. Advanced robotics, there would be sophisticated robots collaborating with humans in manufacturing, logistic, and service industries. So there would be robots working in industries for like assembling or unassembling the machines or equipment. For it will kind of replace human labor. Climate solution where AI optimizing renewable technology, renewable energy systems and predicting environmental changes for better sustainability. AI can be used in uh, renewable energy by, okay, we will talk about this further. Space exploration, autonomous systems, analyzing astronomical data, and managing spacecraft operations. Merits. One of the merits of AI is increased efficiency. Like humans can't work 24/7 for the day, but robots can work 24/7. So there is obviously the enhanced efficiency. We can give tasks from the starting of the day to the end of the day to the machines. Improved accuracy where human errors are reduced for medical diagnosis especially. Continuous operation, like I mentioned, AI systems work tirelessly without fatigue, ensuring round-the-clock service in healthcare security. Innovation is also increasing day by day. AI is updating itself day by day. Personalization, intelligent systems customize experiences across education, entertainment, healthcare, and retail based on individual preferences. Safety भी improve हुई है AI के through. AI-powered monitoring systems detect threats, predict equipment failures, and prevent accidents in industrial settings. Demerits. One of the most important demerit of AI is job displacement. The jobs are decreasing day by day. Security and privacy concerns could be like we are giving AI most of our information to it. So it can increase the security and privacy concerns for ourselves. Also, we are getting too much dependent on AI for any information. Like पहले किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी विजिट करना पड़ता था, बहुत ही बुक्स ढूंढ के कभी पढ़ते थे ये, बट अभी इजी एक्सेस है हर चीज का. डिपेंडेंसी इन द सेंस लाइक if I get a mathematical problem and I am not getting the answer, what will I do? I will put it in Gemini and get the answer. Lack of transparency, autonomous weapons. Okay, this is also one of the demerits of AI. It could be a little critical for safety of any of the country. And yeah, this is also important. The lack of emotional intelligence. AI can be updated to its cognitive intelligence, but there would be a lack of emotion in it. Conclusion. Artificial intelligence represents one of the humanity's most transformative technological achievements, offering unprecedented opportunities to solve complex problems, enhance productivity, and improve quality of life. However, this power comes with significant responsibilities and challenges that require careful navigation. By prioritizing ethical development, maintaining human oversight, and ensuring equitable access to AI benefits, we can harness this technology to create a better future for all. Thank you so much.
for your time. Thank you. Thank you so much, हमने ma'am, for your detailed and informative presentation. Sorry Now, for लंबी हो गई presentation. बहुत सुंदर, बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ किया था आपने और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। अब आदरणीय भाई साहब जगदीश पोखरियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश पोखरियाल जी भाई साहब। अमित वर्मा सर। हाँ सर, I'm here. नमस्कार नमस्कार वर्मा सर। नमस्कार। जी सर। हाँ, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं विप्रा जी से। ओके ओके, तो इसी के साथ में सबसे पहले मैं अभिनव जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने जो है अपना बहुमूल्य समय हमको दे करके इस जो हमारी ये सीरीज है इसको सार्थक किया। उसके अलावा जगदीश पोखरियाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे बीच में, तो उन भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। साथ में प्रोफेसर संदीप जी ऐसी बात नहीं है। आगे धन्यवाद की बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में बैठ करके। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी 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 भाई साहब। हाँ हाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये टेक्निकल प्लेटफॉर्म भाई साहब पूरी सोसाइटी के लिए और उत्तराखंड के लिए स्पेशली हम लोगों ने वो किया है, डिजाइन किया है ना। ठीक ठीक। और हाँ इसमें अभी तक जो है भाई साहब आप अभिनव नेगी जी भी जुड़ चुके हैं सुभाष चंद्र बोस अकेडमी, और ठीक है ठीक है आज ठीक। आज भाई साहब को इनवाइट किया था, है ना। हाँ हाँ उसके साथ साथ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी लगातार ही यहाँ प्रेजेंट कर रही है अपने साथ में। ग्राफिक यूनिवर्सिटी भी का भी रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग। सिर्फ पाठशाला कला मंच के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रहे हैं, और सरस्वती विद्या मंदिर से भी रिप्रेजेंटेशन आ गया है भाई साहब। तो कल मैं उन लोगों की भी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशंस होंगे कल या परसों के दिन, जब भी हमको लगेगा कि उन लोगों को जो सीरीज है उसमें इंक्लूड करेंगे, तो सिर्फ पाठशाला कला मंच के साथ साथ ये नहीं, सरस्वती विद्या मंदिर नथुवाला, है ना, वहां से भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो ये सब है, और टाइम भी जो है भाई साहब। और चलिए बहुत सुंदर। जगदीश जी भाई हाँ साहब कुछ कहना चाहिए यार नहीं भाई बिल्कुल साहब। बहुत सुंदर, ठीक है, कोई पूछना नहीं। हाँ मैं बल्कि ये कहने वाला था, अब मैं अभी जी कोशिश करूंगा अगले हफ्ते ना कुछ जो बड़ी एमएनसीज में जो इसी पे काम कर रहे हैं, जो मैं एक दो उन लोगों को भी जो इसके हुआ है बड़े जी भाई साहब। नाम है जो, तो उनको यस, भी मैं उसमें जोड़ूंगा, मैं उनसे बात करके जोड़ूंगा और उनके जरूर एक्सपीरियंस भी जी शेयर करेंगे। इसमें बच्चों के लिए बड़े काम के आएंगे वो। जी जी भाई साहब। तो एआई के एन प्लेटफॉर्म है ये। उसके अलावा टेक शास्त्रा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसको चला रही है। ये बच्चे हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हैं, शालिनी हो गई और रक्षित हो गए, तो ये बहुत मेहनती बच्चे हैं भाई साहब। तो ठीक ठीक। लगातार जो है बने हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। हाँ अनुष्का हाँ का प्रेजेंटेशन अभी था हमारे साथ में, तो गेट क्वालिफाई इन्होंने किया उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। और ठीक। बाकी जो बच्चे हैं सिर्फ पाठशाला का लॉन्च, और परसों ही 5 तारीख को हमारा फूल दही वाला प्रोग्राम होने वाला है। तो आज को। उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ भी जुड़े हुए हैं, तो ठीक ये ठीक। बड़ी बात है। तो ये एआई के भी एन का प्लेटफॉर्म है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज नेटवर्क। तो उसके सहयोग से ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है। तो फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संदीप जी एक दिन इन सब लोगों के साथ में गेट टुगेदर रख लीजिएगा। जी जी भाई साहब, पक्का पक्का। हाँ किसी दिन ठीक है सबके साथ ठीक में है। बैठ करके, ठीक है ना, चाय पियेंगे सब साथ बैठ जरूर के। जरूर 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 ठीक भाई ठीक साहब। है। हाँ अब ठीक है ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर, अभिनव बहुत जी अच्छा लगा। जी, नमस्कार जी भाई ठीक है साहब। सर, ठीक ठीक। ओके। अभिनव जी, वर्मा सर, ठीक है, हाँ धन्यवाद ठीक है। नमस्कार अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। जी।